Hello, good evening to all. Hello, good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Please let me know in the comment box if I am audible. I will start. If I am audible to you, please let me know in the comment box so that I can start. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. If I am audible, please let me know in the comment box so that I can start the session. So today we are going to see general pharmacology. General pharmacology. We are starting with the general pharmacology. In between that, we will try to finish our volumetric analysis also. तो अभी आज जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और अपना जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा. कल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का एक प्रेसिपिटेशन, टाइट्रेशन एंड ग्रेविमेट्री, ये दोनों मिला के कंबाइन में वो एक लेक्चर होगा आपका. So today we are going to start the general pharmacology. Tomorrow we'll see the gravimetric analysis and respiration titration. General pharmacology will be around 5 to 6 days. Okay. So I have already all the syllabus recorded in the application. You just have to go and you have to watch. Okay. But still I have to take the syllabus. That's why I am repeating it. Okay. Only in a इम्प्रोवाइज्ड वे, और यू कैन से थोड़ा सा ऑडियो इम्प्रोवाइज है इसमें और थोड़ा सा कंटेंट भी इम्प्रोवाइज करूँगा. तो आपको आज की लेक्चर में समझ में आएगा कि थोड़ा सा कंटेंट भी इम्प्रूव किया है, मतलब इम्प्रूव नहीं, इम्प्रोवाइज किया है. इम्प्रूव एंड इम्प्रोवाइज में डिफरेंस होता है. इम्प्रोवाइज मतलब ऐड समथिंग और टू चेंज द प्लान. आई हैव इम्प्रोवाइज द कंटेंट. अगर प्रीवियस के लेक्चर देखेंगे, आज का लेक्चर देखेंगे, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज दिखेगा आपको. ठीक. सो फार्माकोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. Pharmacology is a very important subject for your GPAT, Niper, Drug Inspector and Pharmacist exam. Now pharmacology is a kind of applied subject. Remember, pharmacology is a applied subject and it is based upon the three subjects, mainly your anatomy, physiology, biochemistry and microbiology. So as I told you, pharmacology is a applied subject based upon the anatomy, physiology, biochemistry and microbiology.
right? So these three are the basis, along with the along with the some sort of pathology also. तो एनाटॉम, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड थोड़ा सा पैथोलॉजी, है ना, ये बेसिस है फार्माकोलॉजी के लिए. तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फार्माकोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनाटॉम, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट. ओके, बट some part of pharmacology, say for example your general pharmacology, so that is not based upon these subject, but individual chapters they are definitely individual chapters they are definitely based upon the anatomy, physiology, biochemistry and microbiology. So that's why we are taking the general pharmacology first. Okay, so you might have studied this in your B.Pharm second year or in the B.Pharm third year, right? So general pharmacology is very very important, and if you have analyzed the previous year's paper you will came to know that lot of questions, lot of MCQs that are being covered from general pharmacology. तो जनरल फार्माकोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट है, हर एक पेपर में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको जनरल फार्माकोलॉजी में से ही दिखेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो विल टेक दैट एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन वन लेक्चर, इट विल टेक अराउंड 6 to 7 लेक्चर्स, 5-6 लेक्चर लेंगे ये. तो टुडे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस and important historical points as well as kinetics, right? So first of all what do you mean by first of all what do you mean by pharmacology? So pharmacology is a kind of subject which deals with the study of drugs, particularly their effect, their actions on a living animals, organs, tissue. Now these actions may be either beneficial or harmful, but we are interested in the beneficial effect of drugs only. So pharmacology consists of a detailed study of drugs, particularly their actions on a living organisms, including your humans, animals, microbes. Their actions may be either beneficial or harmful, but we are interested in the beneficial effect drugs. Now first question that can be covered from your pharmacology is nothing but the who is the father of pharmacology. They used to ask you the father of pharmacology. Remember, Oswald Schimmelberg is known as a father. Oswald Schimmelberg is known as the father of pharmacology. Very very important. Already ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है. Father of pharmacology, Oswald Schimmelberg, right? Then what do you mean by pharmacokinetics? Pharmacology mainly consists of a lot of definitions. We are going to cover it, don't worry. So first definition is nothing but the pharmacokinetics. Very very important. What do you mean? What do you mean by pharmacokinetics? तो pharmacokinetics मतलब क्या है? तो the term kinetic refers to a movement. जो term होता है kinetics, this term refers to a movement. So what do you mean by pharmacokinetics? So movement of drug within a body. Movement of drug within a body is known as a kinetics. Pharmacokinetics means what? Movement of drug within a body. तो जो ड्रग का मूवमेंट होता है बॉडी में, क्या मूव होता है ड्रग का मूवमेंट, कैसे होता है बॉडी में, कि बॉडी में ड्रग एब्सॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेटाबोलाइज होता है एंड एलिमिनेट होता है. तो द मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन अ बॉडी नोन एज अ फार्माकोकाइनेटिक्स, आल्सो नोन एज अ एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. तो एंड आल्सो नोन एज अ व्हाट बॉडी डज विद द ड्रग, कि ड्रग के साथ में बॉडी क्या कर रही है, ड्रग के साथ में बॉडी क्या कर रही. सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज एंड यू हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड विद अ पर्टिकुलर टैबलेट. आपको कोई पर्टिकुलर टैबलेट दिया है तो आप उसको क्या करते हो, यू हैव यूज्ड टू इंजेस्ट द टैबलेट, आप मुंह से लेते हो, है ना.
tablet will go to the stomach, it will get disintegrated, it will get dissolved. After that it will be absorbed into systemic circulation. After the absorption ये distribute होगा whole body में, so drug will be distributed throughout the body. After that it will go at a site of action, it will get it will show pharmacological action. After that body will metabolize this drug, okay, will make inactive, and after the metabolism drug will be eliminated or excreted from your body. This movement of drug in a body, that is a absorption, distribution, metabolism, elimination, known as a pharmacokinetics, right? Also known as what does and also known as what body does with drug. बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रही है, बॉडी ड्रग को एब्सॉर्ब कर रही है, बॉडी ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बॉडी ड्रग को मेटाबोलाइज कर रही है, बॉडी ड्रग को एलिमिनेट कर रही है. तो what body does with the drug is nothing but the pharmacokinetics, right? Or in other words you can say movement of drug within a body or the process of absorption, distribution, metabolism and elimination. These are known as a pharmacokinetics, right? तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. kinetics मीन्स क्या, ADME. But another question will be covered here. What is meant by drug deposition? क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी. What do you mean by drug deposition? Drug deposition means what? So last three process, that is the distribution, metabolism and elimination. Last three process from the kinetics, that is the distribution, metabolism and elimination, they are known as a drug deposition process. So distribution, metabolism and excretion together they are known as a drug deposition process. ठीक है, तो क्या होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन ऑफ ड्रग. व्हाट बॉडी does to a drug, what body does to a drug. सेकंड क्वेश्चन कवर होगा आपका, what body does to a drug is known as kinetics. के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. एंड kinetics के प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी इज नोन एज अ kinetics, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. ADME is a kinetics and that is nothing but the what body does with the drug. And drug deposition means distribution, metabolism and elimination. Last three processes of kinetics are known as a drug deposition. ठीक है, clear? I hope I am audible to you. अगर आपको audible है तो yes लिखिए कमेंट बॉक्स में. आप इतने अच्छे से मैं बोल रहा हूँ आपको. नाउ सेकंड डेफिनेशन है आपका. सेकंड डेफिनेशन, फार्माकोडायनेमिक्स. What do you mean by dynamics? So remember, kinetics is related with the movement. Term kinetics is related with the movement. So that's why it is the movement of drug within the body. Kinetics मतलब क्या, movement. Now dynamics मतलब क्या? What do you mean by pharmacodynamics? Pharmacodynamics मतलब क्या? It is related with the action. It is related with the action. Kinetics is related with the movement and dynamics is related with the action. What is the action? है ना, it is a quantitative study of biological and therapeutic effect of a drug. So it is a response of a drug, है ना, pharmacodynamics response of a drug. So in this case you can say what the drug does to the body. What drug does to the body is known as a dynamics. तो pharmacokinetics मतलब क्या? Kinetics मतलब movement of drug in the body. ADME, last three, distribution, metabolism, elimination, on the drug deposition. Kinetics means what body does with the drug. Dynamics means what drug does with the body, है ना, what drug does with the. Now toxicology, one of the definition related with the poisonous effect of drug. Poisonous effect of drug and chemicals and their poisonous effect of drugs and chemicals. The study of
that is known as toxicology. Now, this pharmacology is nothing but the science of drug and human beings right from their evaluation. जैसे इवॉल्व हो चुके, इवोल्यूशन के बाद में ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूसली दे आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ इलनेस. आफ्टर इवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स आर कंटिन्यूसली सफरिंग फ्रॉम देयर some kind of illness. So obviously so that's why human beings are always in the search of medicine. अभी भी अपन मेडिसिन के सर्च में जा रहे हैं. तो टुडे वी आर सर्चिंग द न्यू एंटी कैंसर ड्रग्स, टुडे वी आर सर्चिंग द फॉर एंटीबायोटिक्स, टुडे वी आर सर्चिंग द ड्रग्स फॉर HIV etc etc. So human being after evolution they are suffering from various kind of diseases and they are always in a search of medicine, right? ओल्डेस्ट नोन थेरेपेटिक राइटिंग, जो पुराना सबसे पुराना लिटरेचर है, ओल्डेस्ट नोन थेरेपेटिक राइटिंग इज नथिंग बट द वेदास. तो अपने जो लिटरेचर है एंशिएंट लिटरेचर वेदा, वेद जो उसको बोलते हैं वेद, दे आर द अर्लीस्ट इंडियन रिकॉर्ड्स वेयर देयर इज अ लिटरेचर अबाउट द थेरेपेटिक थेरेपेटिक राइटिंग, मतलब यूज ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ समथिंग फॉर द ट्रीटमेंट. So first literature that is nothing but the Vedas, particularly आपका ऋग्वेदा. ऋग्वेदा is ancient 3000 years before Christi, 3000 before Christi. Ayurveda is a traditional system of medicine for India. It's an ancient system of medicine. ओल्डेस्ट लिटरेचर जो है इंडिया में और चाइना में पाया जाता है. तो इन द इंडिया आयुर्वेदा इज रिलेटेड विद द चरक संहिता, सुश्रुत संहिता and Bhagavata. Now allopathy means what? The term allopathy means other suffering, and so initially the term was homeopathy. So this is one of the system of medicine for the Germany, and homeopathy means what? Like cures like. That's why it is known as a similar suffering. Homeopathy was discovered by Samuel Hahnemann in the 17th century. So that allopathy, homeopathy मतलब क्या? Similar suffering, जैसे आपको सफरिंग हो रहा है उस तरीके से थोड़ा सा डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में ड्रग देना है ना. तो by using similar kind of drug, homeopathy was there. Now after that allopathy, allopathy means other suffering, but nowadays the term allopathy is not used. Nowadays the term modern medicine is used. आजकल अपन क्या बोलते हैं? मॉडर्न मेडिसिन. Today we use the term modern medicine instead of allopathy. Remember? Now we'll see few important definitions from the pharmacology. जैसे मैंने पहले स्लाइड में बोला है कि यही इसी स्लाइड के ऊपर आपके 5 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी. 3 क्वेश्चन तो काइनेटिक्स में कवर हो गए आपके, और एक क्वेश्चन आपका डायनामिक में कवर हो गया. डायनामिक में कवर हो गया. 5 क्वेश्चंस कवर्ड फ्रॉम वन स्लाइड. नेक्स्ट, तो व्हाट डू मीन बाय क्लिनिकल फार्मेसी? फ्यू डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट. ये डेफिनेशंस एक्चुअली आपने सेमेस्टर में पढ़ा होगा, बट 1-2 डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं. ये डेफिनेशन मैंने अभी इंक्लूड किए. व्हाट इज क्लिनिकल फार्मेसी? दैट डील्स विद द ड्रग फॉर्मुलेशन, देयर स्टेबिलिटी, शेल्फ लाइफ, हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर्मुलेशन, देन एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट द compliance and counseling of drug administration, monitoring of errors also. Mainly clinical pharmacy is related with the educating the patient about the drug use, education the patient about the drug use, ensuring the patient compliance, and counseling the patient about the drug administration, and also monitoring the errors of so that is nothing but the clinical pharmacy. Now what do you mean by therapeutics? ये टर्म आपको बहुत सारी बार आएगा. What do you mean by therapeutics? The term therapeutics is originated from Greek word. Therapeutics मतलब to take care, to care or to nurse or to mint care.
deals with the prevention and cure of disease and relief of symptoms. Therapeutics का definition क्या है? It deals with the prevention, cure of disease or relief of symptoms. Therapeutic मतलब क्या है? The branch deals with the prevention and cure of disease or relief of symptoms. नेक्स्ट आता है फार्माको नेक्स्ट डेफिनेशन आता है फार्माको इपिडेमोलॉजी. इपिडेमिक्स मतलब क्या? इन अ सम पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. पैंडेमिक मतलब क्या? इन अ ह्यूज पॉपुलेशन. ये दो टर्म याद रखो. इपिडेमिक मतलब कुछ पॉपुलेशन में और पैंडेमिक मतलब ह्यूज पॉपुलेशन. जैसे कोई डिसीज है, उसका इंडिया में ही ये पेशेंट है, सब इंडिया में ही उसका असर है, तो उसको बोलेंगे इपिडेमिक. एंड अगर वही डिसीज अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में है तो उसको बोलेंगे पैंडेमिक. तो फार्माको इपिडेमोलॉजी स्टडी ऑफ यूज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग इन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन टू गेन insight, to understand or to get a deep knowledge about the efficacy and safety of new drug after approval to the use in the community. Now, so pharmacoepidemiology related with the study of effect of drug in a large number of population and to understand the efficacy, safety of the newly approved drug. Now, next definition है आपका फार्माकोइकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड है ना. जैसे टर्म आता है जैसे आपका टर्म आता है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द मनी. So economics is related with the money. So pharmacoeconomics means what? Analysis of the cost of therapy and its benefit to the society. Analysis of cost of therapy and its benefit to the society. तो ये फार्माकोइकोनॉमिक आता है. तो क्लिनिकल फार्मेसी थेराप्यूटिक्स क्या होता है, फार्माकोइपिडेमोलॉजी क्या होता है, देन आपका फार्माकोइकोनॉमिक्स क्या होता है. तो economics means related with the cost benefit analysis done in the pharmacoeconomics. Cost benefit analysis of cost of therapy and its benefit to the society. नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, फार्माकोविजिलेंस. तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये जीपैट में आ चुका है. फार्माकोविजिलेंस मीन्स व्हाट? ये टर्म आपने सुना होगा, फार्माकोविजिलेंस का सेमिनार हो गया हमारे यहाँ मेडिकल राइटिंग का. बट व्हाट डू मीन बाय फार्माकोविजिलेंस? आपको ये टर्म मालूम है बट उनका प्रॉपर मीनिंग या प्रॉपर डेफिनेशन मालूम नहीं था. दैट्स व्हाई यू यूज्ड टू गेट कंफ्यूज. तो फार्माकोविजिलेंस इज नथिंग बट द आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्पॉन्स टू द इशू ऑफ ड्रग सेफ्टी. Identification of response to the issue of drug safety via detection of adverse effect, long term adverse effect ना. जो फार्माकोविजिलेंस होता है उसका काम क्या होता है? टू कीप ए आई ऑन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, आइडेंटिफाई इट, रिपोर्ट इट एंड डॉक्यूमेंट इट. तो ये है ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्स to the issues of drug safety via analysis of adverse effect and now pharmacovigilance depends on the voluntary reporting of ADR, prescription monitoring, medical record, statistical studies in the population. नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका फार्माकोजेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स मतलब क्या? यहाँ पे वेरिएशंस आ गए, जीन में वेरिएशन. So study of genetic variation in the drugs effect and metabolism of drugs. Study of
genetic variation in the patient related to drug effect, drug metabolism, and deals with the identification of inherited variation in the response or metabolism mediated by single gene. तो हर एक पेशेंट में ड्रग का इफेक्ट अलग अलग आ सकता है, हर एक पेशेंट का मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी अलग अलग होता है. ड्रग एवरी इंडिविजुअल है कैन कम विद द डिफरेंट इफेक्ट फॉर ड्रग, और एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट capacity to metabolize the drug. That is studied in the pharmacogenetics. Now, next is the pharmacogenomics. So it examines the genomic variability, assess its effect on a drug response on humans, microbes, tumors, or explores the way variation that can be used to predict the patient response. फार्माकोमेट्रिक्स मतलब क्या है? मैट्रिक्स रिलेटेड विद द कैलकुलेशन. इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स. इट इज नोन एज अ फार्माकोडायनामिक मॉडलिंग. तो यहाँ पे आपको क्लिनिकल फार्मेसी का रोल पूछ सकते हैं. यहाँ पे आपको फार्माको विजिलेंस का डेफिनेशन ऑलरेडी पूछा है. यहाँ पे भी आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए. प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी यहाँ से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट? यस, है ना. नेक्स्ट इज नथिंग बट द अनदर डेफिनेशन इज नथिंग बट द कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी मीन्स व्हाट? कीमो मीन्स ड्रग, कीमो मीन्स ए केमिकल ड्रग, थेरेपी मतलब यूज ऑफ द ड्रग. तो कीमोथेरेपी nowadays used in the 2 context. ये जो टर्म है 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है. तो एक है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का कीमोथेरेपी एंड एक है एंटी कैंसर ड्रग का कीमोथेरेपी. बट कीमोथेरेपी टर्म ओरिजिनली वाज गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज ऑफ ड्रग इन द माइक्रोब्स. तो chemotherapy is concerned with the effect of drug upon the microorganism and parasite which are living and multiplying in the living organism. तो आपको अगर कोई इन्फेक्शन होता है, कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, तो आप जो एंटीबायोटिक्स लेते हो, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स लेते हो, उसको बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट जो है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी. सो कीमोथेरेपी इज कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स अपॉन microorganism, parasites which are living and multiplying in the living organism. Now very important definition again. Next is the orphan drug. Now these are the drugs which are used for the treatment of rare disease. और ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार आ चुका है. ये क्वेश्चन मिनिमम 4 या 5 बार आ चुका है. 4 या 5 बार आ चुका है. ऑर्फन ड्रग. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग? तो ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस. ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस. जो रेयर डिसीज होता है उसमें जो ड्रग यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग. एंड ऑर्फन ड्रग डेफिनेशन क्या है? ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज. नाउ व्हाट डू मीन बाय रेयर डिसीज? रेयर डिसीज मीन्स व्हाट? जैसे फॉर एग्जांपल एनी जेनेटिक डिसीज है, तो फिर एनी रेयर जेनेटिक डिसीज, रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसीज, रेयर कार्डियक डिसीज, दैट इज नोन एज अ रेयर डिसीज. जैसे मान लीजिए सर्दी, खांसी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन बहुत सारे लोगों को है, बट सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर एटेक्सिया या फिर कोई अलग टाइप का ट्यूमर या फिर अलग टाइप का एक डिसीज है ना, तो नहीं है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को नहीं होता है, तो वो रेयरली होता है. मतलब जैसे होता ना कि जैसे 1 लाख पीपल अगर होंगे उसमें एक हाथ को क्या होगा, एक हाथ को
है ना हीमोफीलिया होगा, तो 10,000 पर्सन है, इसमें एक आध को हीमोफीलिया होगा, बट 10,000 जो है उनमें बहुत सारे लोगों को सर्दी खांसी हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज होगा। तो रेयर डिसीज है ना, तो डिसीज दैट ऑकर्स इन 1:10,000, 10,000 लोगों में से एक को अगर हो गया तो उसको रेयर डिसीज बोले। तो ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज नोन एज orphan drug. Orphan drugs used in the treatment of rare disease. और एग्जाम्पल से पेंटामेडिन है आपका, बट द ड्रग्स विच आर अंडर द ऑर्फन ड्रग एक्ट 1983 आर आल्सो नोन एज ऑर्फन ड्रग. Orphan drug act was first enacted in 1983, first time in the USA. So drugs which are covered under Orphan Drug Act, so they are the drug used to treat the rare diseases, and the list of drug includes, say for example, sodium nitrite, omeprazole, liposomal amphotericin B, miltefosine, rifabutin, succimer, somatotropin, toxin immunofab, lithothyronine, and lot of drugs are there, you know. So drugs, these drugs are used in the treatment of rare disease. This is sodium nitrite used in the treatment of cyanide poisoning. Omeprazole is used in the alcohol poisoning. Liposomal amphotericin B used in the multiple diseases. Miltefosine, rifabutin, succimer, somatotropin, digoxin, immunofab, lithothyronine. So here is the list of few other orphan drugs like rituximab. It is a monoclonal antibody used in the cancer. Ranilizumab, it is also a monoclonal antibody used in the ophthalmology. Somatotropin. No. Then lenalidomide used in the cancer. Imitinab mesylate, again used in the cancer. Filgrastim. This is a drug used in the treatment of when there is a deficiency of leukocyte. Leukopenia. Filgrastim in the treatment of leukopenia hematology. Then glatiramer acetate used in the recombinant factor 7. ये blood clotting factor है, is used in the hematology. Bortezomib used in the cancer. So a lot of drugs which are used in the treatment of rare disease, they are known as a orphan drug. They can ask you question like this: one of the following drug is a orphan drug. तो आपको examples मालूम चाहिए. You should know the examples, and they have already asked multiple times about the orphan drug in a different exam, GPAT Niper DI Pharmacist. What do you mean by orphan drug? Drugs used in the treatment of rare diseases. रेयर डिसीज मतलब क्या है? जैसे आपका है ना ट्यूबरकुलोसिस रेयर नहीं है, बहुत सारे लोगों को ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी भी बहुत सारे लोगों को है, या फिर आपको डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है, हाइपरटेंशन बहुत सारे लोगों को है, कैंसर भी आजकल बहुत सारे लोगों को है, बट सेरेब्रल पाल्सी बहुत कम लोगों को है, फिर जेनेटिक जैसे फोकोमेलिया बहुत कम लोगों को है, जैसे क्लिप्लेट डिफेक्ट बहुत कम लोगों को है. तो ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज. Now we'll see the next definition. Essential drug list. Essential drugs. तो essential drugs के ऊपर एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे. जो लास्ट ईयर में फार्मासिस्ट का एग्जाम का पेपर हुआ था, में एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे. There are the 3 questions from this essential drugs in the pharmacist exam. It is also important for GPAT Niper DI Pharmacist. What is the essential drug list? So it is a list of drugs compiled by WHO and that can satisfy the healthcare need of majority of population. So essential drugs, these are the drugs listed by WHO
in the national list of essential medicine. National list of essential medicines, and these are the drugs that can satisfy healthcare need of majority of population. जैसे मान लीजिए इंडिया का जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ है, 130 करोड़ में से 70% लोगों को तो पैरासिटामोल लग गया रहेगा, पैरासिटामोल लगे। आउट ऑफ 130 crore people, a lot of people will need paracetamol, cetirizine, or you can say aspirin, you can say so painkillers, esclopine, diclofenac. So these are one of the essential drug. Essential drug list means drug list prepared by WHO that can satisfy the healthcare need of majority of population. The list is also prepared by particular regulatory agency of country. जैसे आपके इंडिया का, अपने इंडिया का रेगुलेटरी एजेंसी कौन है? PSCO, CDSCO, सेंट्रल ड्रग रिसर्च, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग है ना, CDSCO वो अपना है। TGA ऑस्ट्रेलिया का होता है, US FDA US का होता है ना। particular country of a particular agency, regulatory agency of country will also prepare this list and known as essential drug list. But इसके ऊपर 3 क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन था what is essential drug list? So it is a list of drug given in the national list of essential medicine, and that is nothing but that can satisfy the healthcare need of majority of population. Second question था who publishes the essential drug list? तो उस क्वेश्चन में आंसर था WHO publishes the essential drug list. And third question था India's first essential drug list was published. India's first essential drug list published in the 1917. 1917, and latest essential drug list is nothing but the list given in the 2011. उसके बाद में फिर से 2022 में एक लिस्ट आया था। तो करंट essential drug list is the latest essential drug list published in 2022, which has a 384 drugs. 18th list. Now next definition is a P drug. What do you mean by P drug or personal drug? P drug or personal drug, one of the definition in the pharmacology. Actually such kind of concept doesn't exist, but what happens, due to regular prescription, patient will become familiar with the drugs which has been prescribed to him. Are the drugs chosen by physician for prescribing regularly, to which patient will become a familiar, known as a P drug or personal drug concept. Next, what is the source of drugs? Drug का source क्या हो सकता है? And drug can be obtained from mineral source. For example, talc होता है आपका, एओलिन होता है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है. So drugs which can be obtained from mineral sources and also animal source. एनिमल सोर्स से क्या मिलता है आपको? वेरियस काइंड ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स, से इंसुलिन हो गया, हिपेरिन हो गया, गोनेडोट्रोपिन हो गया. So they are obtained from sheep, pigs and cows, etc. Then plant are also source of drugs. Drug can be isolated from plant. A lot of plants are having therapeutic effect. जैसे आपका डिजिटलिस है ना, सेन्ना है, जैसे आपका ग्लिसराइजा है, जैसे बहुत सारे ड्रग हैं, जैसे एकोनिट है, बहुत सारे. नाउ ड्रग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोबियल सोर्स. से क्या मिलता है आपको? एंटीबायोटिक्स मिलता है. माइक्रोबियल सोर्स से क्या मिलता है? एंटीबायोटिक्स, as well as enzymes, as well as nowadays hormones are also
Hormones are also made using recombinant DNA technology using factories. Now drug may be either synthetic जो फैक्ट्री में आप केमिकल रिएक्शन से बनाते हो. So sources of drug can be obtained from either mineral source or either animal source or plant source or microbial origin or synthetic origin. यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए ड्रग्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम प्लांट यू आर गोइंग टू गेट अल्कोलॉइड्स प्लांट से आता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन इज एनालिसिक, एट्रोपिन, इमेटिन, इनक्रिस्टिन इज एंटी कैंसर, ग्लाइकोसाइड्स जैसे डिगोक्सिन इज यूज्ड इन द कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर. फिक्स्ड ऑयल्स जो है जैसे फॉर एग्जांपल ओलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल इज अ पर्गेटिव, गांजा ऑयल. देन एक ऑयल होता है लेप्रोसी में यूज करते हैं, volatile oils are mostly used as a flavoring agent. पेपरमेंट ऑयल होता है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन, लो ऑयल इज एनालिसिक. मिनरल ऑयल्स होता है हाइड्रोकार्बन, लिक्विड पैराफिन विच इज लुब्रिकेटिव एंड लैक्सेटिव. रेजिन्स है, ओलियो रेजिन्स है, गम्स, टैनिन्स एंड मिसलेनियस कंपाउंड्स. तो drug can be obtained from mineral sources, animal sources, plant sources, microbial source and synthetic. Now very important definition, bioavailability. So what do you mean by bioavailability? So bio means living system and availability मतलब presence. Bioavailability means what? So is the availability of drug biologically or availability of drug in a biological system, or you can say it is the amount of drug that reaches to a systemic circulation from a given dosage form. Amount or percentage of drug that is absorbed from a given dosage form and reaches to a systemic circulation. जो ड्रग आपने लिया है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड तक जाता है, जितना अमाउंट जाता है उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम. नाउ बायो अवेलेबिलिटी इज denoted by the term F, capital F. F for fraction. It is a fraction of drug that reaches to a systemic circulation after the site of administration in a given dosage form. अभी देखो यहाँ पे डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है मल्टीपल टाइम्स. डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है. दूसरा क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, जैसे when drug is given by intravenous route the bioavailability is 100%. When drug is given by intravenous route, the bioavailability of drug is 100%. Why? Because intravenous में क्या कर रहे हो आप? You are injecting a drug directly into a circulation, directly into a blood. That's why there is no question of absorption distribution. So when drug is given by intravenous route, the bioavailability is 100%. इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. डेफिनेशन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है. So bioavailability is 100%. That is denoted by F is equal to 1. Okay? Remember, right? So the formula for bioavailability. तो फॉर्मूला क्या है, इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आता है. Bioavailability F is equal to AUC means area under curve after oral administration into the dose of intravenous divided by area under curve after intravenous administration dose of oral.
पीओ मतलब होता है पर ओरल, और इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. पीओ मीन्स पर ओरल. एरिया अंडर कर आफ्टर oral administration into dose of IV divided by area under curve under IV administration into dose of oral. So that will give you bioavailability. एरिया अंडर कर्व वगैरह क्या होता है अपन नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में देखेंगे. विल सी इट ऑन अपकमिंग स्लाइड्स, है ना. एफ इज अ बायो अवेलेबिलिटी, ना. एरिया अंडर कर्व ओरल डोज, एरिया अंडर कर्व आफ्टर आईवी डोज. टी इज नथिंग बट द डोज, इंटरनल डोज. टीपीओ मतलब ओरल डोज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायो इक्विवेलेंस? के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड ऑन दिस. व्हाट डू यू मीन बाय बायो इक्विवेलेंस? व्हाट डू यू मीन बाय फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विवेलेंस? व्हाट डू यू मीन बाय थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस? तो ये जो टर्म्स है, देयर आर फ्यू टर्म्स लाइक दिस. बायो इक्विवेलेंस. What do you mean by bioequivalence? So bio means what? Bio is related with the living system. Equivalence means what? Equivalence means same. Equivalence means same, similar. What do you mean bio? This bio is term related with the biological system, and that is related with the bioavailability. So what is bioequivalence? When the rate and extent of bioavailability of an active ingredient of a two formulation are same and they are tested by standard method, they are known as a bioequivalent. When the rate and extent of bioavailability of a active ingredient of a two formulation आर सेम, अगर दो फॉर्मुलेशन है उसका बायो अवेलेबिलिटी सेम है एंड टेस्टेड बाय स्टैंडर्ड मेथड, तो बोलेंगे बायो इक्विवेलेंट. मान लीजिए आपके पास में दो टैबलेट है, एक है कालपोल 500 एंड एक है पैसिमोल 500. कालपोल 500 में पैरास्टामोल 500 मिलीग्राम है, पैसिमोल में भी पैरास्टामोल 500 मिलीग्राम. कालपोल जो है वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके कालपोल टैबलेट बनाता है और पैसिमोल टैबलेट बनाता है आपका इपका का लेबोरेटरीज. ये दोनों टैबलेट है, अलग अलग कंपनी की टैबलेट है, और दोनों में क्या है पैरास्टामोल 500 मिलीग्राम है ना. और दोनों का अगर बायो अवेलेबिलिटी सेम आता है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ कालपोल टैबलेट and पैसिमोल tablet is the same and the rate of, है ना, the rate and extent of bioavailability of both two formulation, they are same, known as a bioequivalent. Is that clear? Next term is a pharmaceutically equivalent. Next term is a pharmaceutically equivalent. When two formulation contain same active ingredient, they are in a identical strength, concentration and dosage form, they are known as a pharmaceutical equivalent. और इसके ऊपर GPAT 2019 में क्वेश्चन आया है, नाइपर में क्वेश्चन आया है, GPAT 2023 में क्वेश्चन आया है. मतलब एक ही टर्म है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, इसके ऊपर 3 बार क्वेश्चन आया है ना. व्हेन टू फॉर्मुलेशंस आर हैविंग सेम ड्रग, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, सेम डोसेज फॉर्म, सेम डोज. जैसे मैंने बोला था आपको, एक टैबलेट है कालपोल, एक टैबलेट है पैसिमोल. दोनों भी क्या है टैबलेट ही है, दोनों में भी क्या है पैरास्टामोल नाम का ड्रग है. कितना है दोनों में 500 मिलीग्राम है. तो
दे आर नोन एज अ फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट. इसका ड्रग सेम है, डोसेज फॉर्म सेम है, इंग्रेडिएंट सेम है ना. If two formulation are having same API, same dosage form, same dose, known as a pharmaceutical equivalent. But bioequivalence मतलब क्या, तो उनका बायो अवेलेबिलिटी सेम होना चाहिए. दोनों के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं. देयर आर फ्यू टर्म्स लाइक बायो इक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, थेरेपेटिक इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस. Now chemical equivalence means what? Say chemical equivalent. Chemical equivalent means when two formulation they are having same drug and same salt and they are made by same synthesis method. अगर दो डोसेज फॉर्म में सेम ड्रग है, उसका सॉल्ट भी सेम है और उसका सिंथेसिस का प्रोसेस भी सेम है, उसको बोलेंगे केमिकल इक्विवेलेंट. केमिकली इक्विवेलेंट. एक होता है थेरापेटिक इक्विवेलेंट, एक होता है थेरापेटिक इक्विवेलेंट. केमिकल इक्विवेलेंट, थेरापेटिक इक्विवेलेंट. थेरापेटिक इक्विवेलेंट मतलब क्या? when two drugs have same pharmacological effect. When two drugs have same pharmacological effect, they are known as therapeutic equivalent. में डोसेज फॉर्म में केमिस्ट्री कुछ नहीं आता. अगर दो ड्रग है, उनका दोनों का थेरापेटिक एक्शन सेम है, उन्होंने थेरापेटिक इक्विवेलेंट. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको फीवर आता है तो पैरासिटामोल फीवर कम कर देगा, तो वही पैरासिटामोल की बजाय आपने आइबुप्रोफेन ले लिया, फिर भी फीवर कम हो जाता है. आइबुप्रोफेन, पैरासिटामोल, दे आर नोन एज अ थेरापेटिक इक्विवेलेंस. Next definition is the hard drug. हार्ड ड्रग मतलब क्या? हार्ड ड्रग मतलब क्या? हार्ड ड्रग मतलब these are the drug which are not easily metabolized in the body, so they resist the metabolism in the body. जो ड्रग जल्दी मेटाबलाइज नहीं होता बॉडी में, उसको बोलेंगे हार्ड ड्रग. एग्जाम्पल है आपका इनाप्रिलेट, लिसिनोप्रिल, क्रोमिलिन. Inaprillate, lisinopril and cromolyn. These are the drugs which are not metabolized easily in the body. They resist the metabolism, that's why they are known as hard drug. What do you mean by soft drug? So obviously these are the drugs which are easily metabolized in the body. With drugs which are easily metabolized in the body, they are known as soft drug. So style iridium, soft chloramine, ये जो drugs है easily metabolized होते हैं, that's why hard drugs and soft drugs. इसी स्लाइड के ऊपर आपके कम से कम मिनिमम 5 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं. मिनिमम 5 क्वेश्चंस. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी? द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू ए सिस्टमिक after absorption from the site of administration. So formula for bioavailability is nothing but the bioavailability is equal to area under curve after oral administration and area under curve after intravenous administration. Is known as the absolute bioavailability. And previous formula is for relative bioavailability. तो दो टर्म होता है, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी. Suppose you have taken the tablet, will go into the stomach, it will
disintegrate, and in the GIT it will get dissolved in the body fluids. GIT fluids में dissolve हो गया, वहाँ से क्या होगा, GIT is supplied with the large number of veins and capillaries. That veins and capillary will unite to form a portal vein. Now whatever drug is released in the GIT along with the your food, आपका जो खाना है उसके साथ में ड्रग क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा. बट आपका खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, they should be carried to a liver for the metabolism, because liver is a metabolic factory of your body. So depending upon the physicochemical properties of drug, so whatever drug is absorbed from GIT, it is first carried to a liver via portal vein, and in the liver some amount of drug is metabolized before reaching to a systemic circulation. That metabolism is known as a first pass effect. Or also known as a pre-systemic metabolism. आपने जो ड्रग ले लिया टैबलेट के साथ में, वो जीआईटी में गया, आपके डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, तो जीआईटी के फ्लूइड के साथ मिक्स हो गया. जीआईटी में जो एब्सॉर्प्शन होता है ना, जो वेन्स में एब्सॉर्प्शन होता है, जो ब्लड जीआईटी से वेन में जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विथ योर न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट में क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, vitamins and amino acids, minerals. So along with that your drug will also get absorbed, and GIT is largely supplied with the capillaries which will unite to form a veins, and venules will combine to form a portal vein, and portal vein carries blood from GIT to the liver. क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, some amount of drug gets directly into the liver, and there is a metabolism of drug before that drug going to the systemic circulation. Systemic circulation में जाने से पहले ही उसका कुछ partly metabolism होता है, that is known as a first pass effect. It is known as a first pass effect. Or also known as a pre-systemic metabolism. First pass effect or pre-systemic metabolism, याद रखना है. First pass effect. Okay, now we'll see this typical plasma drug concentration curve, typical plasma drug concentration versus time curve, showing the different kinetics and dynamics. तो मान लीजिए आपने एक टैबलेट ले लिया, मान लीजिए 500 mg का पैरासिटामोल का टैबलेट ले लिया. Suppose you have taken 500 mg paracetamol tablet, that will go into the stomach, that will disintegrate, that will go dissolution. Dissolution होने के बाद में क्या होगा, तो drug will start absorbing into your blood. Drug will start absorbing into systemic circulation. So blood level of drug will rise, will go up to certain level, and then drug level will get decreased. आपने ड्रग ले लिया, धीरे धीरे वो आपके ब्लड में आ रहा है ना. एक टाइम आएगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ड्रग का ब्लड में होगा, बाद में ड्रग का अमाउंट कम हो जाएगा. तो दिस इज नोन एज एब्सॉर्प्शन फेज. This left side is known as absorption phase, and this right side is known as elimination phase. यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है ड्रग, यहाँ पे एब्सॉर्ब हो रहा है.
Now there are few terms. Okay, first term is nothing but the minimum effective concentration, MEC. First term is a MEC. It is known as a minimum effective concentration. What is that? It is a concentration of drug in the body. Concentration of drug in the body which is required to produce a therapeutic effect. ये क्या होता है? Minimum effective concentration. It is a minimum amount of drug that is required to produce a pharmacological effect or to show the pharmacological effect. That's why it is known as a minimum effective concentration. So it is a concentration of drug in the plasma which is required to show the effect. That's why minimum effective concentration. Now below this concentration, ये कोई भी हो सकता है, जैसे 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल ले लिया आपने, तो उसमें का मान लीजिए 125 mg मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 125 mg. उतना अगर है तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट मिलेगा, उससे कम है तो नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा है तो मिलेगा. तो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू show the pharmacological effect. Another concentration is there known as a maximum safe concentration. This is the concentration of drug in the body which is the maximum concentration for safety. Above the maximum safe concentration there is a toxic effect. Now concentration range between these two, concentration range between minimum effective concentration and maximum safe concentration is known as a therapeutic window or therapeutic range. तो concentration range है इसका, तो concentration range of drug in the blood है ना, between minimum effective concentration and maximum safe concentration. The concentration range between MEC and MSC is known as therapeutic window और therapeutic range. और इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है. This range is known as a therapeutic window. Minimum effective concentration means minimum effective concentration means concentration of drug required to produce a pharmacological effect. Above that there will be effect, below that there will be no effect, or also known as sub therapeutic level. अगर MEC मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन से अगर कम कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में तो उसको बोलेंगे सब थेरेपेटिक लेवल. मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन से अगर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको बोलेंगे टॉक्सिक लेवल. और द कॉन्सेंट्रेशन रेंज बिटवीन MEC एंड MSC नोन एज अ थेरेपेटिक रेंज और थेरेपेटिक विंडो. के ऊपर 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका जीपैट में, बाकी एग्जाम में भी आता है. Now as I told you, the time duration for which drug concentration will remain above the MEC. The time duration for which drug concentration will remain above the MEC. The time duration for which drug concentration will remain above the MEC known as the duration of action. कितने टाइम के लिए मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेशन था बॉडी में तो बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. द टाइम required to reach a minimum effective concentration. Time required to reach a minimum effective concentration is known as onset time. And also known as the onset of drug action. Onset of drug action क्या है? The time required to start the action from the time of
डोसेज फॉर्म, मतलब अभी आपने टैबलेट ले लिया के बाद हाफ एन आवर में अगर आपको इफेक्ट मिलता है, दैट इज ऑनसेट टाइम, onset of drug action, and the time duration for which drug concentration in the plasma remains above MEC, known as the duration of action. And the maximum concentration of drug in the body, the maximum concentration of drug in the body is known as a Cmax. At the Cmax, आप याद रखना, rate of absorption is rate of elimination, कि जितना एब्सॉर्ब हो रहा है उतना रिमूव हो रहा है. At the Cmax, absorption is equal to elimination, right? And the time at which there is a Cmax is known as a Tmax, and this whole area is known as the area under curve. So if you plot a plasma drug concentration versus time after a single oral dose administration, you will get a one curve known as a typical plasma drug concentration versus time curve. Typical plasma drug concentration versus time curve, that will show you some kinetic as well as some dynamic parameters, which I have already explained. तो याद रखना है आपको. रिमेनिंग पॉइंट्स विल सी टुमारो, कल देखेंगे. याद रखना है आपको. सी यू टुमारो. आपको इंटरेस्ट नहीं है शायद, आई थिंक एक ही बच्चा ज्वाइन है.